शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम् अशेषजन्तोः स्वस्थये स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि दारिद्र्यदुःखभय हारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। नमस्कार, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। आज के इस आयुर्वेद पर्व के समारोह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हर घर हर दिन आयुर्वेद इस थीम के अनुसार 7वां आयुर्वेद दिवस मनाने जा रहे हैं। वैसे तो कई दिनों से आयुष मंत्रालय के द्वारा जो भी थीम को लेकर जिस प्रकार से मंत्रालय के तहत में जो भी सारे सरकारी ऑफिसर्स है, सरकारी जो भी मंत्रालय के कक्ष है, उनके द्वारा ये हर दिन हर घर आयुर्वेद की जो थीम है उसके अनुरूप कई सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। हम सभी लोग अलग अलग स्तर पर अलग अलग माध्यम के द्वारा अपने कॉलेज में, अपने अस्पतालों में इस आयुर्वेद दिवस को मना रहे हैं। इस साल जैसे कि कोरोना काल के बाद ये एक लाइव या जैसे ऑफलाइन टाइम का ये रहा है, तो इसलिए इस समय पे बहुत ही ज्यादा और जोर शोर से हर्ष और उल्लास के साथ आयुर्वेद दिवस को मनाया जा रहा है। वैसे तो हम लोग इसको वर्चुअली मना रहे हैं, बट अभी के लिए मुझे लगता है ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। जैसे आप सभी अलग अलग देश के हिस्सों से हमारे साथ जुड़ते हैं, तो इसीलिए ये भी एक आनंद और हर्ष के उतने ही जोश के साथ हम लोग इस आयुर्वेद दिवस को मनाते हैं। तो आयुष दर्पण फाउंडेशन के द्वारा इस आयुर्वेद दिवस के अवसर पर पेपर प्रेजेंटेशंस एवं पोस्टर प्रेजेंटेशंस आदि प्रतियोगिताओं का हमने यहाँ पे आयोजन किया था। तो आज इसी के साथ आज का हमारा पहला सत्र है जिसमें हम लोग पेपर प्रेजेंटेशंस यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
यहाँ पर उपस्थित सभी जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं। ऐसे इस समय थोड़ा पार्टिसिपेंट्स कम है क्योंकि आई थिंक ऑफलाइन कार्यक्रम बहुत ज्यादा जोर से चल रहे हैं, इसीलिए और व्यस्तता के कारण कुछ कम लोग हैं। फिर भी उतने ही नियमों के साथ और उतने ही हर्ष के साथ हम लोग इसको मनाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो हमारे साइंटिफिक कमेटी की मेंबर है डॉक्टर पूनम सावरकर मैडम, वो भी जुड़ चुकी है। मैडम स्वागत है आपका। मैडम जो है डॉक्टर पूनम एसोसिएट प्रोफेसर है पंचकर्म विभाग में, वर्धा DMIMS जो यूनिवर्सिटी है वर्धा महाराष्ट्र से है, तो उनका भी मैं यहाँ पे स्वागत करती हूँ। मैडम इस पेपर प्रेजेंटेशन का इवैल्यूएशन करेंगी। इसी के साथ जो मेन प्रोग्राम होगा 23 अक्टूबर को दोपहर में 3 बजे होगा। उस समय हमारे जो अलग अलग बाकी के भी प्रोग्राम्स है जिसमें आयुर्वेद जो दिवस हम लोग मना रहे हैं ना, तो उसके लिए हमने जो एक स्पेशल इशू रिलीज कर रहे हैं उसको अभी हम लोग उसी दिन अवलोकन करेंगे। और इसी के साथ हमारी जो एक किताब है ओबेसिटी आयुर्वेद इनसाइट्स करके, उसको भी हम लोग उसी दिन उसका विमोचन करने वाले हैं। तो इसी समय इसमें ज्यादा समय ना गवाते हुए सबसे पहले तो हम लोग आज पेपर प्रेजेंटेशंस को स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर पूनम, आर यू देयर? Yes, ma'am. Absent. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Welcome. I'm here. Yeah, ma'am. वेलकम वन एंड ऑल। सबसे पहले मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा जी को, जो कि काफी दिनों से हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे अलग अलग प्रतियोगिताओं में भी वो पार्टिसिपेट करते हैं। सर तांतिया यूनिवर्सिटी से है, PhD स्कॉलर है। और सर आप खुद अपना परिचय दीजिएगा। आपके पास समय होगा 5+2 मिनट्स, तो आप 7 मिनट्स तक इस पेपर प्रेजेंटेशन आपका कर सकते हैं। Thank you, ma'am. Thank you, sir. Okay, ma'am. Sir, are you able to share your screen? Yeah, ma'am. पर ये हो नहीं रही, मैम। हाँ, अभी देखिए सर, you just try now. हाँ जी, जी मैम, 1 मिनट। Yes sir, please continue. Okay. पर मैम मुझे दिखाई नहीं दे रही है ये। सर अभी आपका केवल ये स्क्रीन शेयर हुआ है, स्लाइड अभी आई नहीं है, तो आप ट्राई करते रहिए तो स्लाइड आएगी। सिर्फ आपका मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा है। मैम मैंने शेयर तो कर दिया है पर अभी आ नहीं रहा है इसमें। जस्ट ट्राई 1 सेकेंड, एक बार फिर से ट्राई करिए। जी मैम। मैं तब तक आप किसी और से बुलवाइए, ये मेरा हो नहीं रहा जरा शेयर। या ओके सर, नो इशू। या so yeah, next I will call upon Dr. Vaishnavi Gore ji. Are you able to share? Dr. Vaishnavi? Dr. Vaishnavi, are you there? Dr. Sonia, you may please proceed. Dr. Sonia. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, please. Myself, Dr. Sonia Mandal from Mahatma Gandhi Ayurvedic College. I'm here to present my case presentation, and the topic is. I request all other participants, Dr. Vaishnavi and Dr. Rajesh ji, please make it possible to share. Yeah, slides are visible, ma'am, and you are also audible, so please continue with your presentation. Just here. As
Myself, Dr. Sonia Mandal from Mahatma Gandhi Ayurvedic College, guided by Dr. Poonam Savarkar, ma'am, Associate Professor of Department of Panchkarma. Today I'm here to represent my case about insomnia, depression-induced insomnia. Demographic. Now we start. Case detail, demographic detail of the patient: name Anna Zotin, age 64, sex male, and address Melgaon, weight 60 kg, occupation shopkeeper, marital status married, and religion Hindu, socio-economic status middle class, and height 159 centimeter. Patient, the 64-year-old male patient come in OPD of Panchkarma with significant history of disturbed sleep, headache, heaviness in the head, partial memory loss, and hesitancy by micturition. He was admitted to Mahatma Gandhi Ayurvedic College Hospital and Research Center for treatment. And the above complaints are mentioned in table number 1, which is mentioned here: disturbed sleep from 120 days, heaviness in head, headache, partial memory loss from 5 months, and some associated complaints are here: hesitancy while micturition, back pain, pain in left shoulder joints from 5 months. And progression of disease, the patient appeared to be normal 5 months ago, but after that he began the experience problem getting to sleep and staying asleep. He usually goes to sleep at 10 p.m., but he does wake up until 12 a.m. Every night the cause him to wake up 3 to 4 times, and it takes him roughly 15 minutes to fall asleep again after each awakening. He was also experiencing a headache and head heaviness simultaneously. He also reported a 5-month history of back pain, shoulder pain, and difficulty in urination. In spite of the fact that the patient was not getting enough sleep and the severity of all his complaints were growing daily due to family stress, he consulted an Ayurvedic doctor and went to the Panchkarma OPD at Mahatma Gandhi Ayurvedic College Hospital and Research Center for additional Panchkarma treatment. History of patient: past history, no history of diabetes, mellitus, hypertension, thyroid dysfunction, and family history disturbed and stressful. Medical history: first procedure urethroplasty on 10/7/2015 and stricture urethra. Second procedure uretroplasty with buccal mucosa graft. Surgical history of files and personal history: diet normal, diet sleep and duration disturbed, only 2 to 3 hours per day, addiction, tobacco chewer since 6 to 8 months, marital status married. Nidan Panchar, as we know, Ketu, Chinta, Krodh, Shod, tobacco chewing addiction, Vruksha, Ahar Vihar, Roop, Angamad, Shirorog, Shirogaurav, Vatarog, Jadya, Upashya, Shir, Anuk Mamsras, Shir Vikara, Shaman Chikitsa, और शोधन चिकित्सा पूर्व संप्राप्ति निदान सेवन चिंता क्रोध शोक सूचना हर व्यार aggravation of वात पित्त दोष irritation of manas and when he aggravate manah kalant, absence of manovritti, anidra develop. संप्राप्ति घटक दोष वात पित्त प्रकोप कफ क्षय श्रोतस मनोवह रसवह सोत दुष्टि प्रकार संग अधिष्ठान हृदय अग्नि विषमाग्नि and उभवस्थान हृदय. Clinical examination: general examination, pulse 80 per minute, BP 130/70 mmHg, respiratory rate 17 per minute, temperature 98 degree Fahrenheit, height 159 centimeter, weight 60 kg, BMI 23.7 kg. Systemic examination with modern perspective: CNS, insomnia, anxiety, CVS, S1, S2, audible, respiratory aid is by BS. Per abdomen soft and non-tender, superficial and deep tender defects are normal. Ashtabid Pariksha, Nadi, Vataj, Pitaj, 130/70 mmHg, 60 per minute pulse rate, Mal, Samyak, Mutra, hesitancy, Jiva, Sam, Shabd, Sparsh, Anushna, Sheep, group normal, Akriti, Madhyam. Tashvik Pariksha, Prakriti, Vat, Pitaj, विकृति में दोष वात पित्त वृद्धि कफ क्षय दुष्य मनोवह रसवह स्रोत दुष्टि सा मध्यम सहनन अस्मृत प्रमाण हाइट 159 वेट 60 kg सत्व मध्यम सातवें रुक्ष आहार शक्ति जारण व्यायाम शक्ति मध्यम वय वृद्धि. Systemic examination according to Ayurvedic perspective: Pranavah Strotas, dyspnea or exertion only. Annavah Strotas, loss of appetite. Udakvah Strotas, no history of dehydration. Rasavah Strotas, lack of interest. Mutravah Strotas, resistancy. Manovah Strotas, family history or insomnia. Asthimachavah Strotas, musculoskeletal pain. Mamsavah Strotas, usually musculoskeletal pain.
No any found deformity in rest of scrotus, like that is Raktavaya and Vedavaya and Shukravaya scrotus. Differential diagnosis Manosat, that is depression or anidra, depression-induced insomnia. Diagnosis anidra, depression-induced insomnia. Observational result: the Pittsburgh Sleep Quality Index test or is an effective tool for measuring adult sleep quality and pattern. It distinguishes between poor and good sleep by assessing 7 domains: subjective sleep quality, sleep latency, sleep durations, habitual sleep efficiency, sleep disturbance, use of sleep medication, and daytime dysfunction in the previous month. PSQI is used here, as well as we have used insomnia severity index group assessment of before or after treatment of anidra. The score of patient which is taken 18 at the time of admission is very high and get reduced up to 4 after 30 days of treatment mentioned in the below table. As I told, at the time of admission, the score is 18, and after treatment, the score get 0 only 4. Insomnia severity index. Before treatment, total score is 19. At a time of 8 day 10, at 16 days 2 and 30 day 0. Comparative sign and symptom assessment of the patient. Therapeutic intervention, Shodhan Chikitsa, which first is Sarvang Bhaya Sneha with Dashmul Tel for 20 days, Peti Swed for 20 days, Shiro Abhyang Brahmi oil for 15 days, Anu Tel, Marsh Nasya Anu Tel 8 drop in each nostril for 8 days, Shadbindu 8 drops in each nostril for 8 days, Anuvasan Basti with Dashmul oil 60 ml for 6 days, Niru Basti Dashmul Quad plus 800 ml honey 15 grams and the 10 gram Dashmul oil 30 ml in Gomudra 20 ml for 15 days, Erandamul Basti Erandamul Quad Bala Yashti Madhu 100 ml plus honey 15 ml Sandhav 10 gram and Gomudra 30 ml for 6 days. Shaman Chikitsa, Brahmi Vati, 2 tablets twice a day after food with lukewarm water for 30 days. Gandharv Haritki, 200 mg, 10 gram HS at a bedtime, lukewarm water for 30 days. Simanath Gulgul, 250 mg, 3 tablets twice a day after food with lukewarm water for 30 days. Agnitundi Vati, 2 tablets twice a day after food with lukewarm water for 30 days. Manas Mitradi Vati, 1 tablet twice a day after food with lukewarm water for 10 days. Rasna Satakpad 15 ml twice a day after food with lukewarm water for 10 days. Tablet Shallaki XT 1 tablet twice a day after food with lukewarm water for 20 days. Hingvastic Chun 5 gram twice a day before food with lukewarm water for 30 days. Discharge medicine Chandraprabhavati 3 tablet twice a day after food with lukewarm water. Gandharv Haritki 10 gram at bedtime with lukewarm water. Singanath Gupul 3 tablets twice a day after food with lukewarm water. Manas Mitradi Bati 1 tablet after food with lukewarm water. Rasna Satakwa 15 ml twice a day after food with lukewarm water. Tablet Shallaki 1 tablet twice a day after food with lukewarm water. Hingvastic Chun 5 gram before food with lukewarm water. Pathya Ahar Ahar Mansa of Anus Desha, Sali rice, curd, milk, wheat. Apatya mein hot spicy food, coffee, tea and smoking. Pathe mein Bihar, practicing yoga and medication, and Oshad Saman and Shodhan Oshad. Apatya Bihar, daytime sleeping avoiding, and Oshad Vata Pitta Vardhak. Sorry मैम रेफरेंस पहले पुट हो गया, ये डिस्कशन है. Anidra has a Vata and Pitta Dushti Lakshan and is a Vata Snanatmaj Vikar. Tarpak Kaf and Pran Vayu and Sadhak Pitta are all vitiated in Anidra. Tarpak Kaf is a type of kaf responsible for brain cell nourishment and proper night's sleep. Pran Vayu is a Vata Dosh subtype. Murdha, the head and top half of the trunk, is the seat of Pran Vayu. Pitta Dosha has a variant called a Sadhak Pitta and with the seat of Sadhak Pitta and handles emotions, spirituality and desire. Any imbalance in these 3 dosha result in sleeplessness, insomnia.
Here we treated the patient of Anidra with Vata Gandravya Vasti along with Shiroabhyang Nasya and internal medicines. Shamanosa in the treatment of Anidra measure with Vat Shamak, Vedna Shamak and Rog Nivarak effect and pacifying effect on mental activity should be used. Hingvastuk Chun, Gandha, Haritki Chun, Mitral Yog, Amekundi Vati and Sanath Tuddu. These are the classical yog which is prescribed. Shiroabhyang. The nervous system can be relaxed by receiving therapeutical head massage by applying medical oils during the massage that are specifically formulated for your condition and absorb nicely on head, scalp, and hair roots. Vasti, the majority of the time, bowel health is related to sleep issue. The Vata dosha is said to have its seat in the colon. Your Vata dosha and lower intestine can be brought back into balance by colon cleansing using medicinal herbs. Nasya, the mode of action of Nasya is when Nasya Dravya is instilled into the nostril, the drug reaches Shringatak Marm, trying to bring Marm back into contact with the Sira of Nas, Nasa, Akshi, Karn, and Gala. As a result, as the drug is instilled, it travels to the upper part of the nasal cavity and stimulates the olfactory neurons, causing the vitiated dosa to be spread. Thank you, Dr. Sonia. Thank you very much. I just want to ask one question. Can you please just elaborate the scale or whatever you have used for this? Ma'am, it's Pittsburgh or Insomnia Severity Index scale. Can you just elaborate? Just Yes, ma'am. explain. Yeah, please. If anyone wants to ask any question, Dr. Poonam, please proceed. Yes, ma'am. Pittsburgh. Okay. Dr. Sonia, please focus over the Ayurvedic diagnosis of this patient. I'm audible. Yes, ma'am. Shilpa ma'am, I'm audible, Yes, na? yes, yes, Ah. yes. Please, Sonia, please focus over the Ayurvedic diagnosis of this patient. Yes, ma'am. Ma'am, I have used Pittsburgh Sleep Quality Index. No, but madam is asking about what's No, about no. Ayurveda diagnosis. Yeah, what is the diagnosis of this patient according to Ayurveda's perspective? Because I know you have diagnosed the patient as depression-induced insomnia, Yes, but because we have to select some specific treatment principle according to Ayurveda. So that's why a diagnosis according to Ayurveda perspective is very, very mandatory. I have diagnosed this patient with Anidra, which is depression-induced insomnia. मैम यहाँ पे पेशेंट जो था इनको फैमिली स्ट्रेस वगैरह बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से इनको और कुछ उनकी पास्ट हिस्ट्री भी थी, जिसकी वजह से मैम जो इनको मतलब शुरू में मैम इनको काफी प्रॉब्लम मतलब सोने में जैसे यहाँ पे कंप्लेंट्स वगैरह बताई है. Yes. Okay. What is the predominance of dosha? Which predominance of dosha you observed in this patient? मैम वात और पित्त. Only vata. Is there any association of any dosha? मैम वात एंड पित्त दोषा इनमें मतलब एग्रीवेट हो गए. Okay. Shilpa ma'am, from my side, my side it is over. You can ask to another evaluator. Yeah. Okay, so thank you. I welcome, I welcome Dr. Gaurav Savarkar sir, who is the another evaluator of scientific committee member. Sir is professor in Chari Rachana department, Mahatma Gandhi Ayurved College, Wardha, Maharashtra se. So welcome sir on this platform, and I request you to give your opinion or remark over this paper. Dr. Gaurav sir, are you there? If possible, you please. I think sir is busy, Dr. Poonam, so we can proceed with another. Yes, ma'am.
Yes, ma'am. Yeah. But before that, I have to ask the scholar. I give message to scholar. It is all scholar. That is, they should follow the time limit because Yeah, it yeah. is very, yeah, it is very necessary. And their evaluation will be based on some specific point. That is the content of presentation, way of presentation, timely completion, even novelty of the topic, and last one, that is the way of question answering the question. Okay. So based on this point, we can evaluate. So please, all presenter, keep in mind about all these points. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I call upon next presenter, Dr. Verma ji. Dr. Verma ji, Dr. Rajesh Verma, जी मैम, जी मैम, जी मैम, please. जी मैम। अरे इसमें आ क्यों नहीं रहा है ये बताओ, इसमें आ क्या नहीं रहा है, जरा फाइल को शेयर कर दो। सर मे बी ना पुअर नेटवर्क कनेक्शन होगा, दैट्स व्हाई वो आपकी स्लाइड नहीं दिख रही सर। पूरा लगा दो। ये 1 मिनट में डाउनलोड ये रहा डाउनलोड। हाँ ये नहीं मैम, डॉक्यूमेंट अब इसमें ये ये वाली देखो पीडीएफ, ये पीडीएफ यही है। अरे शेयर नहीं होती, सिर्फ ब्लैक आ रही है, वो फुल बुक है। नहीं मैम को नहीं आ रही वो सर आपकी स्लाइड है क्या? पीपीटी आपकी है मोबाइल में? कहाँ पे है? उसको जरा ओपन करके रखिए ना, मतलब एक्सप्लोर करके रखिए एंड देन शेयर योर स्क्रीन। अनसपोर्टेड। Can we take next presenter? यस सर, यस यस प्लीज। हाँ मैं आई थिंक, तब तक इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ हाँ डॉक्टर वैष्णवी, ये नहीं है भैया, ये नहीं है। डॉक्टर वैष्णवी, आर यू रेडी? Yes, ma'am. प्लीज प्लीज प्रोसीड। यूटिलिटी ऑफ यूटिलिटी, ये क्या है? ये सर अभी हो गया था आपका, राजेश जी आपका हो गया था जस्ट नाउ। अच्छा हुआ था मैम? हाँ हुआ था, उसको करिए फिर से जस्ट 1 मिनट में। अभी हुआ था मैम, बोल रहे हैं पूछ लो ना, इसी में ऊपर जाएंगे। आप ये यूटिलिटी, हाँ मैम मेरे से हो नहीं रहा है, आपको भेज दूं क्या पीपीटी? हाँ भेजिए भेजिए भेजिए, मैं करती हूँ, तब तक हम लोग डॉक्टर वैष्णवी का लेते हैं। चलिए मुझे भेजिए। हाँ ओके, थैंक यू। डॉक्टर वैष्णवी प्लीज कंटिन्यू करिए। Is it visible, ma'am? हाँ हाँ यस यस। Good afternoon, everyone. Myself, Vaishnavi Shankar Gore from Sanskrit Sahita Department, Government Ayurved College, Nagpur. Today, my topic is role of Achar Rasayan in promotion of health. Introduction. Ayurveda is science of life. Its foremost aim is the maintenance of health and treatment of disease. The word Rasayana is established from the word Ras plus Ayan. Ras refers to nutrition and Ayans means that is transmission in the body. Medicine or means or practices which generally enrich the Rasaraktadi Dhatu in the body and establish good health and long life are called Rasayan. Medicine that delays aging and diseases are called Rasayan by the Acharya Sharma. Acharya Rasayan code of behavioral conduct to be exercised for the maintenance of health. One who practices such conduct gain all benefits of Rasayan therapy without administration of any drug or medicine. A calm and composed mind is essential for enhancing quality of life. We have many treatments and medication to help with the mental calmness. However, behavioral action are more effective at calming the mind than medication. Achar Rasayan is an innovative idea in behavioral medicine found in Ayurveda.
Aim and objective. To evaluate and elaborate the importance of Achar Rasayan in promotion of health. Methodology. Material. Charak Sahita and their commentaries. Other Ayurvedic literature will be referred whenever required. General and internal. Method. Collection of literature about Achar Rasayan and its importance in promotion of health from all Ayurvedic Sahita and their commentaries. This is the conceptual study under the title Role of Achar Rasayan in Promotion of Health. Review of literature. Achar Rasayan is mentioned in most of the Ayurvedic Sahita. In Charak Sahita, it has been described in 4th Pada of Rasayan Chikitsa. Achar Rasayan comprises of following behavior: Satyavadi, Akrodham, Nirutta Madhya, Nirutta Maithun, Ahimsak, Anayasam, Prashantam, Priyavadinam, Shauj, Dhir, Dananitya, Tapasvin, Devgo Brahma, Vruddharchani Ratam, Nitya Karuna Vedina, समजागरण स्वप्न नित्य क्षीरघृतम देशकाल प्रमाणज्ञ युक्तिज्ञ अनहंकृत उपासितार वृद्धानम जितात्मान धर्मशास्त्र प्रमाण. The concept of Achar Rasayan for better understanding can be divided into 4 aspects: psychological aspect, social aspect, religious aspect, and spiritual aspect and personal aspect. In psychological aspect, Satyavadinam, Akrodi, Ahimsak, Prashantam, Anayasam, Priyavadinam, and Chappa. In social aspect, Satyavadinam, Nivutta Madhya, Nivutta Maithun, Anahankrut, Upasitara Vruddhanam, and Devgro Brahman, Vruddharchane. Religious and spiritual, Dharmashastra Param, Adhyatma Pramanindriyam, and Tapasvinam. In personal aspect, Sauch Param, Samajakaran Swapna, Nityashir Vrutam, Deshkal Pramanindriyam, and Chitatma. Discussion. Achar Rasayan in Ayurveda is guidelines to adopt right behavior in order to live with ease and peace. Code of ethics, which is being described by Acharya, useful for maintaining a healthy state of mind. Exercising these rules give balance and peace of mind. Achar Rasayanam act in various aspects by improving the personality, by improving the social relationship, by improving the physical health, and by improving the mental health. Achar Rasayan enhances the central nervous system. Achar Rasayan helps the individual in understanding the society and to know the role of individual in society. To achieve the equilibrium in daily life, Achar Rasayan is helpful. Psychological medicine plays a crucial part in tackling the problem of chronic illness that troubling us today and are caused by stress, life, and poor lifestyle. It is the way of life to improve lifestyle in our for perspective of life. If Achar Rasayan is correctly applied to our life, the teaching of Achar Rasayan can create the society that is prosperous, healthy, and free from disease. It not only stops the onset of disease, but it also reverses the progression of condition. Untruthfulness, ungratefulness, disrespect of the God, insult of the elders, sinful acts, evil deeds of the past, and intake of iruddahar are the positive factors of khilaf. Overstrain cause diseases like rajekshma or exertion responsible for dysfunction in mind and senses, hemorrhagic disorder, cough, fever, and vomiting. Excessive sexual activity and anger decreases the shukra and pulse, which is responsible for various symptoms such as dyspnea, headache, cold, fever, diarrhea, anorexia, and chest pain. Excessive and improper alcohol consumption responsible for Madattevadi having symptoms, body ache, dyspnea, vomiting, diarrhea, dizziness, cough, insomnia, joint pain, and chest pain. All food that are sattvic means sheer and growth, meaning they are pure and convert easily to ojas. Speaking the truth helps to produce ojas, the correlate of happiness and health to be created. Not only anger but ojas, but also produces aman anguish. Through sharing their knowledge and experience, teachers and elders can impart to us priceless lessons. Achar Rasayan is a form of Adravyabhut Rasayan in which no medical intervention is taken into account. This technique improves the mental and physical health of people as well as other aspects of their life. It boosts physical and mental immunity, which is crucial for leading healthy life. To learn about Vedic literature, our mind is describing Achar Rasayan as well. One will limit his or her participation in Prajna Parab if they are familiar with literature. By following Achar Rasayana, our mental faculty becomes lucid and immune.
Our mental ability to grow clear and provide immunity by adhering to acharasam. Mind connects the physical body to the soul. When mind is free from raj and tama, it proceeds to no action and the prescribed activities are suppressed. Conclusion. The Rasayan therapy in Ayurveda is important in modern era in order to attain the aim of elimination of root cause of any disease. Achar Rasayan means health promoting lawful behavior. This should be considered as complementary therapy. Achar Rasayan substantially focuses on psychological aspects. Its helps in maintaining the equilibrium of manas just by boosting the sattva good. Good behavior emphasizes the goodness in person which would elevate their soul, which results in happiness and peace, and make free from anxiety and stress. Any disturbance in manas guna will give rise to manas vikaras like calm, growth, etc., and thus decrease the quality and quantity of oils, and it affects the immunity. Ayurveda prescribes certain tools for maintaining the healthy state of mind. This is called as ethical regime, that is sadhika. These are not simply principles of right conduct that are applicable to all people of all time and all places, but by practicing these rules give balance and peace of mind. Acharasana is economical therapy to reduce global burden of disease. Acharasana, that is Ayurvedic lifestyle modification, has been highly significant practical. References. Thank you. Can you show your conclusion site? Okay, sir. As you mentioned here, the Rasayana therapy in Ayurveda is important in modern era in order to attain the aim of the elimination of root cause of any disease. Right? Can you give one example for the same? Any applied aspect for the same line in the present era? Take one disease and explain about the Rasayana therapy. डॉक्टर वैष्णवी जस्ट एक्सप्लेनिंग विथ वन एग्जांपल, एक एग्जांपल के साथ बता दीजिए कि आज के जीवन में हम लोग इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं. Do you hear us? I'm audible to you, Vaishnavi? डॉक्टर वैष्णवी रिस्पॉन्स दीजिए. डॉक्टर वैष्णवी आर यू देयर? प्लीज आपका रिस्पॉन्स चाहिए. ओके. Dr. Gaurav sir, what to do? Shall we proceed with next one? I think she is not Yes, yes, ma'am. answering. Yes, we can proceed. राजेश जी मैं आपका शेयर कर रही हूँ, प्लीज आप कंसंट्रेट जी, करिए. जी. पीपीटी शेयर कर. जी मैम, जी मैम, जी मैम, जी मैम. Respected Ayush Darpan team. सर आपने इसको पीडीएफ बनाया है क्या? जी जी मैम. क्योंकि ये फिर मैक्सिमाइज नहीं कर पा रही इसको. तो मैम विदाउट उसका भेज दूं क्या पीडीएफ का? नहीं ठीक है सर, ठीक है, अभी चलने दीजिए, अभी चलने दीजिए. वो दिखता है, आई थिंक इट्स विजिबल. Okay, okay, ma'am. So today my paper topic presentation is utility of Rasayan herbs.
Myself, Dr. Rajesh Kumar Verma, PhD scholar and Associate Professor, Darpagun Department, Prem Raghu Ayurvedic Medical College. Next one, ma'am. So first uh, heading is Introduction. Ayurvedic system of medicine describe the concept called rasayan, which is created of two words, ras and ayan. Here, ras is dhatu and ayan means the way which delay the aging process, maintain youth, improve mental health, as well as eliminating medical condition caused by infectious organisms, mental or physical stress. The medicinal plant agni and srota. Next, next month. The need of rasayan. The lifestyle in today's scenario is very hectic. Everyone is busy and hence overstressed in terms of physical well-being, mental well-being, or both. People don't follow a proper diet and thus leads to poor nutritional status of the body. Tendency of lethargy increased day by day. All factors lead to depression, insomnia, recurrent diseases, etc. Hence, rasayan is needed to combat all the conditions. It is also mentioned by Acharya Sarangadhara. Next one. Material and methods. Various Ayurvedic classic books, study materials, and review have been introduced. Much rasayan concept and role of herbal immunomodulator medicine for prevent and the treatment of various diseases has been described. Next one. Concept of rasayan. It consists of two words, rasa and ayana. Rasa means rasaraktadi dhatus and ayan means to achieve excellent rasaraktadi dhatus. Hence, rasayan means attaining excellence in rasaraktadi dhatus. Rasayan is related to the concept of anti-aging and longevity enhancement of immune system. Rasayan nurses all tissue of the body. Next, ma'am. Rasayan action moral and cellular immune function. Herbal immunomodulator is a substance which stimulates or suppresses components of the immune system. The system includes both innate and adaptive answer. Various medicine plants and many rasayan claimed to have immunomodulatory activity. Example, ashwagandha, vacha, pippali, kutki, gudchi, kushmanda, satavari, amalaki, yashti madhu, and etc. Next one. How rasayan herbs work? The rasayan herbs work as a four levels. At the level of rasa, means poshak rasa, they enhance the nutrition and helps in improving the nutritional value of plasma. At the level of agni, they improve digestion and metabolism. Hence, this results in improved nutrition to the body tissue. Effect on srotas, improving microcirculation by cleaning the srotas. And dravya prabhav, rasayan action because of their specific effect. Next one. Rasayan effect on the body. One of the main uses of rasayan medicine is to modulate the immune response. Stress has an immune suppressive effect which can interfere with the defense mechanism of the body. Rasayan medicine has widely clinical use, including suspected disease that they are included by oxidizing free radicals. Likewise, their anti-aging can be attributed to a similar mechanism. Rasayan is reported as an मैम थोड़ा सा हाँ has an antioxidant effect. The second last is discussion. So rasayan herbs mainly has madhur vipak. These herbs act as a free radical hunter. These are the rich in vitamin C, vitamin E, and beta carotenes, riboflavin, etc. Therefore, these substances are capable of neutralize the harmful effect of oxidation. Therefore, they act as antioxidant. Next one.
Conclusion: the term rasayan refers not only a medicine, it is a multidimensional approach that takes into account whole body, mind, and spirit, thus affecting the total welfare of an individual. A rasayan herb fortify the body, enhance immunity, strength, resistance, quality, and quantity of ojas. Is the sar of all dhatus, which restores spirit, vitality, and thus achieve longevity. Thank you. डॉक्टर राजेश जी, आप थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे कि एज के हिसाब से, एज के अनुसार अलग अलग रसायन आप एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा, कैसे काम करेगा? यूटिलिटी ऑफ रसायन हर्ब्स आपका सब्जेक्ट है ना, उसके अनुसार बताइए थोड़ा। आज बच्चों को आजकल हम ब्राह्मी घृत वगैरह यूज करते हैं, स्वर्ण प्राशन वगैरह में। स्वर्ण प्राशन है और इसमें ब्राह्मी घृत है, वचा स्वर्ण है, ये बच्चों को यूज कर सकते हैं। और जो बड़े लोग हैं, जैसे पिप्पली वर्तमान रसायन है, ये आमल की रसायन है। हेलो, हाँ हाँ, यस यस, ओके ओके। डॉक्टर गौरव सर प्लीज। सर, जो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था इसके पहले, जी 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 सर, प्रेजेंटर थे उससे पहले, तो उन्होंने एक एस्पेक्ट बोला था कि रूट कॉज ऑफ डिसीज एंड उसके ऊपर जो रसायन थेरेपी, राइट? तो ऐसा कोई है डिसीज जिसको हम रसायन थेरेपी से क्योर कर सकते हैं? थोड़ा सा मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलिए सर। ऐसा कोई डिसीज है जिसको हम रसायन थेरेपी से क्योर कर सकते हैं? ऐसा जो डिजीज, हाँ, हेलो, ऐसा कौन सा डिजीज है जो रसायन ओनली बिकॉज ऑफ रसायन थेरेपी? हाँ सर, जो मानसिक विकारों में बहुत अच्छा रिजल्ट है ये रसायन का। यह रसायन कोई ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर डिजीज, हम सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी रसायन को यूज कर सकते हैं। नहीं, वो बात अलग है। जी जी जी, तो है, वो बात अलग है, मुझे बोलता अगर कोई डिसीज का रूट कॉज को हमें रिमूव करना तो सर डिजीज में जैसे सिंपल, जैसे अपना मानस विकारों में कुछ मानस विकार ऐसे हैं जिसमें हम अगर, जैसे ब्राह्मी रसायन है ये, जैसे बहुत से लोगों को थोड़ा सा जैसे नींद नहीं आ रही, अनिद्रा की वो होती है, तो हम जैसे ब्राह्मी वटी के भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। नहीं सर, सर इज आस्किंग अबाउट एनी स्पेसिफिक डिसीज कंडीशन। ऐसी कोई अवस्था है क्या कि जिसमें हम लोग केवल रसायन का प्रयोग करके पेशेंट को तो दुरुस्त कर सकते हैं? रूट कॉज की बात कर रहा हूँ। तो मैम अनिद्रा बताया ना मैंने। अच्छा ठीक है, ओके, ठीक है सर, ठीक है। जी 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 जी, थैंक यू मैम। क्वेश्चन, राकेश सर, डॉक्टर राकेश सर। हाँ मैम, प्लीज कंटिन्यू। या डॉक्टर राकेश सर, आई एम ऑडिबल ना? मैम राजेश मैम। Yo, sorry. Okay, Rajesh sir, please, can you, is there any evidences which are conducted on the animal study showing the rasayan effect of any herb? मैम एनिमल स्टडीज है क्या सर, जो रसायन के या फिर एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट दिखा रहे हैं, ऐसे कुछ स्पेसिफिक स्टडीज है? ऐसा स्टडी है, पर मैं अभी मेरा जो पेपर मैंने पूरा जो बनाया है उसमें मैंने रेफरेंस दिया है, तो मैं अभी आपको बता नहीं सकता क्योंकि मेरे पास है नहीं है, पर है, हुई है। ओके, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी हुई है मैम। यस सर। तो आप कौन से हर्ब्स की जो मैंने अभी इसमें एक पीपीटी थी जिसपे मैंने अपनी हर्ब्स एक्सप्लेन की थी, अश्वगंधा, वचा, पिप्पली, वो इन्हीं में से कुछ। यस सर, आई एम आस्किंग द सेम। ऐसी कौन सी स्पेसिफिक हर्ब है कि जिसके ऊपर ऑलरेडी उसकी रसायन या फिर एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट प्रूव हो गई है? सो आगे चल के हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर एक क्लिनिकल ट्रायल प्लान कर सकते हैं ना? दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग सर। ये जो मैम मैंने जो इसमें एक्सप्लेन किया उनका सब तक क्लिनिकल ट्रायल हुई है, सबका मेरे पास रेफरेंस है, मेरे पेपर में सारे एक्सप्लेन है। सर मेरा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली, मैं ऐसा पूछ रही हूँ। मैम आप ये बोलिए कि किस ड्रग के ऊपर हुई है? यस, तो ऐसे उन्होंने कौन से सर पीपीटी में, सर आप आगे की बात, आप हाँ थोड़ा सा आगे की बात आप सुन लीजिए। तो उन्होंने कौन से पैरामीटर उसका, यस सर, उसका
हाँ एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी हुई है मैम इसमें। यस सर, बट उन्होंने कौन से पैरामीटर्स लिए हैं? अब मैम ये उसको पैरामीटर्स उसको तो प्रूव मैं करने अभी के लिए आपको नहीं उन्होंने बता क्या पाऊंगा। क्या लिया? वो कैसे, जैसे रसायन इफेक्ट है तो हम किस बेसिस पे उसको उन्होंने दिखाया है? ये मेरा बेसिक क्वेश्चन है सर। जैसे आप बोल मैम रहे हैं जो ना रसायन, अश्वगंधा के ऊपर जी हुआ जी है, बराबर है? जी तो जी जी उन्होंने जी जी जो एनिमल स्टडी हुए होंगे सर, तो उन्होंने कौन से जी जी पैरामीटर लेके वो कैरी फॉरवर्ड किया है उसको? मैम उसको इसका जो जैसे अश्वगंधा का जो मेन है मूल रूट का जो ये सॉल्युबल्स बना के वो एनिमल्स पे यूज किया है। सर वो तो हमारा मटेरियल हो गया ना, क्लिनिक एक्सट्रैक्ट जो आप बोल रहे हैं ना, वो तो हमारा मटेरियल हो गया, जी लेकिन जी उन्होंने जी कौन से, जैसे हम डायबिटीज है सर पेशेंट को, तो हम बीएसएल फास्टिंग या पीपी या जी जी HbA1c बिफोर आफ्टर करते हैं ना, वैसे जी जी एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट देखने जी के जी लिए उन्होंने क्या क्या पैरामीटर्स यूज किए? दैट इज माय मेन क्वेश्चन सर। वो मैम वो अभी मैम नहीं मैम मुझे बता पाऊंगा मैं। ओके सर, ओके, थैंक यू। जी 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 ओके थैंक यू मैम। ये बस रोक दो हमें साइड, शिल्पा बस मैम, हम वी यहीं कैन कर गो जाएंगे। अहेड। यस यस यस। सो आज मुझे लगता है हमारे पास मैम इतने मैं ही पेपर्स थे। लीव हाँ बोलिए सर। लीव है जाऊँ मैम? मैं यस सर। छोड़ना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा मैम प्रोग्राम है, हाँ मेरा ठीक है सर, प्रोग्राम इट्स है, मैं ओके। जाना चाहता ओके हूँ। ओके सर, थैंक यू ओके सर, ओके। ठीक है, कोई थैंक बात यू नहीं। मैम। तो आज हमारे पास इतने ही पेपर्स थे शायद, जैसे मैंने बताया था। तो आप सभी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, और यहाँ पे उपस्थित हमारे जो साइंटिफिक कमिटी मेंबर्स है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना कुछ रिमार्क दे, कंक्लूडिंग रिमार्क। डॉक्टर गौरव सर प्लीज। सभी के पेपर्स तो हमने देखे, उसके हिसाब से कुछ आंसर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे। 6 to हाँ 7 question, yeah, 6 to 7 paper presentations. All are good. Having some chance to modify them, answering question. थोड़ा सा ये जो मोटिवेशन रहता है वो थोड़ा सा कम था, बट दैट इज ओके। एंड आई एम thanks to you also to invite us as a judge and for this session. So thank you very much, Shilpa ma'am, and the organizers. यस सर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर पूनम प्लीज। Yes, ma'am. In this session, total 3 papers were there. One was case study and 2 was review paper. Basically, all 3 papers were good. But actually, I disappointed with certain things that I have already told. That is first one, that is the time management during the presentation was not followed by the 2 scholar actually. Though content was good, but actually the way of presentation should be attractive and in a presentable manner. So so I think for the next time the presenter should take kind of this. And second one, when we are in question answering session, we are the responsible person, so that's why we should remain in touch up to the end of the session. So it is my humble request to all presenter to they should follow the all guidelines given by the organizer for the presentation. And from these remarks from my side, ma'am. And thank you very much for giving me such a golden opportunity to attach with you. Thank you, ma'am. Thank you. या सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। एंड इसी के साथ हम लोग इस सत्र का अंत करते हैं। जैसे Thank you कि very much, आज ma'am. ये हमारा पेपर प्रेजेंटेशन का फर्स्ट ये था, और डॉक्टर गौरव सर एंड डॉक्टर पूनम इज आल्सो द इवैल्यूएटर फॉर द पोस्टर प्रेजेंटेशन कंपटीशन। और 23 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे इसी समय पर हम लोग जो आयुर्वेद डे का मुख्य प्रोग्राम है उसको सेलिब्रेट करेंगे। हर दिन हर घर आयुर्वेद इस थीम के अनुसार हमारे लिए उस दिन के लिए जो भी प्रमुख वक्ता एवं चीफ गेस्ट के रूप में प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार, जो कि अभी अभी रिटायर्ड हुए हैं बीसी जोधपुर यूनिवर्सिटी के, और एक्स डायरेक्टर है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ न्यू दिल्ली के, ऐसे जाने माने व्यक्तित्व हमारे पास उस दिन उपस्थित रहने वाले हैं। और एक आनंद की बात यह है कि उन्हीं के हाथों से और उन्हीं के द्वारा फॉरवर्ड की गई हमारी जो मल्टी ऑथर बुक है ओबेसिटी आयुर्वेदा इनसाइट्स, उसी दिन हम लोग उसको लॉन्च कर रहे हैं। एक्चुअली बुक प्रिंट हो चुकी है और अभी मार्केट में और फ्लिपकार्ट अमेजोन सभी ऑनलाइन मीडिया पर अवेलेबल हो चुकी होगी। तो इसी उद्देश्य के साथ इसी कार्यक्रम पे आप भी जुड़िएगा सभी, और इसी लिंक के साथ मैं आपको लिंक भी शेयर करूंगी। उस दिन हमारा पोस्टर प्रेजेंटेशन का ये होगा, 3 से 5 मिनट हम लोग पोस्टर प्रेजेंटेशन के लिए समय देंगे।
और फिर डॉक्टर नीता मैसेकर जो कि दूसरी चीफ गेस्ट है इस प्रोग्राम के लिए, और सारे हमारे जो ओबेसिटी मल्टी बुक है उसके ऑथर्स भी प्रेजेंट रहेंगे। और अनेक शुभकामनाओं के साथ मैं यहाँ पे इस सत्र का कंक्लूड करती हूँ इस सत्र को, और आप सभी का भी आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी नेशनल आयुर्वेदा डे। Thank you. Same to you. थैंक यू मैम। नीलम जी नमस्कार।